Management Overseas Investment Rules 2022. These rules are related to the some of the resident of the Indian want to invest into the foreign country or the foreign company. If they want to invest more than the 10% in the assets of the company or the immovable assets, there's a specific term given, the immovable assets, or the ownership of the company, or the more than the 10% of the company. These are some of the specific conditions given by the RBI. So there are new rules regarding the investment in the foreign, like the foreign direct investments के लिए India में rule है. If any foreigner want to invest in India, there are some of specific rule here. Similarly, if the resident of the country want to invest into a foreign country in their immovable assets, buying houses in the country, or in the some of the cases they want to take or some of the company there, like the Baidu take over some of the company in the US, like a Whitehead Junior cases में उन्होंने लिया, and also some of the other company they take over from the US. तो वहां पे take over किया. So there was not some specific rule initially mentioned. So in that case, the RBI comes with the new rules in the 2022 regarding these company. And the specific किसके लिए लाया गया? Those people who are going out of the India after the taking more money, like the Vijay Mallya, like the Nirav Modi. तो जो debt को लेके चले गए हैं, they are not coming back to the country. So in that case, the RBI specify some of the rules. If you want to leave the country or you want to invest into other country, so there should be clarity. There should be a NOC, non-objection certificate. NOC होना चाहिए from the different bank जहां से आपने loan लिया है. If the bank are providing a NOC, then only you can leave the country or you can invest in the other country. Without the NOC, you cannot invest. And also there is a timeline given by the RBI. It's a 45 or the 50 days. If the bank are not given the NOC within the 50 days or the 45 days, in that case it is considered as this person is not having any loan on himself, so he can or she can invest into the foreign country or can go out of the country with its assets. तो उनको रोकने के लिए, also the NPA को रोकने के लिए there comes with this foreign direct investment rules. अगर आप लोग देखोगे, they are like Lalit Modi during the IPL, he went to the London and also take the assets there. There was no rules regarding the taking of the assets. Similarly, happens with the Vijay Mallya. He also living the lavish lifestyle in the England. Similarly, the Nirav Modi, Mehul Choksi on the other country, also Nirav Modi in the other country. So these are some of the businessmen who are going out of the country with taking the huge amount of the money, and somehow also planning in the country कि ऐसा भी हो सकता है, तो we also can go taking the huge amount of money out of the country. So the RBI take these rules कि without इसके you cannot go out of the country or you cannot invest more than the 10% without taking the approval from the RBI in any of the cases here. So let's see what's the provision. So this is the under the पहले किसके अंडर होता, Foreign Exchange Management Act, FAMA Act. The FAMA Act was comes in 1999. If there is any investment into any country, that's what can be controlled under the Foreign Exchange Management Act. कि आप किसी भी country में invest कर रहे हैं. Now these are updated with the Foreign Exchange Management 2020 rules के लिए इनको update कर दिया गया. There are some of the other conditions also mentioned with the FAMA conditions. FAMA condition is still there, and now the new condition is added by the RBI. So it will be administered completely by the Reserve Bank of India, and also assume all existing norms pertaining to the overseas investment as well as the acquisitions of the immovable property outside the India. जो India के outside immovable property है, so that can be controlled through this act. Then the new norms aimed at making the easier for domestic corporates to invest abroad. Like there is also some of the issue. Some of the businessmen who are in the India not able to invest into other country. तो उस केस में उनको भी ease out करने के लिए, so that they can also invest into other country, so that the remittances can be comes into the India for a longer time. तो वो invest करेंगे तो remittance in the form of dollars will come to the country. So this is also for that they can also making it easier for domestic corporates to invest abroad while making it tougher for the loan defaulters. तो दोनों conditions में against the loan defaulters and also for the investment into the other country, those who want to invest into the country from the India itself. So there is a condition. There is a condition number 1. No Indian resident shall be allowed to make investment into the foreign entity that are engaged in the real estate activity, gambling in any form. So if there is a statement related to Indian can invest into the real estate activity or the gambling activity in the foreign, so this statement will be incorrect here. No Indian resident is allowed to invest into the gambling activity or the real estate into the foreign country. Also dealing with the financial products linked to the Indian rupee.
अगर कोई ऐसे बिजनेस में इन्वॉल्व है जो दैट्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इम्पैक्टिंग द इंडियन रूपी, उसमें भी आपको अगर इन्वेस्ट करना तो यू शुड बी कंसल्ट विद द स्पेसिफिक अप्रूवल विद द आरबीआई। तो आरबीआई के साथ आपको तो स्पेसिफिक अप्रूवल लेना होगा, देन ओनली यू कैन इन्वेस्ट इनटू द दोज बिजनेस व्हिच आर डीलिंग विद द रूपी देयर। Second, to make it difficult for the bank defaulter and the fraudster to acquire the assets abroad, they need to take the NOC from their debt provider. लोन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट उनको लेना होगा जहां जहां से उन्होंने लोन लिया है फ्रॉम द डेट प्रोवाइडर, ओनली देन दे कैन इन्वेस्ट इनटू द अदर कंट्री। अभी से पहले क्या होता था, वो दे विल टेक द ऑल द मनी एंड बाय इन द सम ऑफ द कंट्री देयर इज अ कंडीशन, अगर आप इतना पैसा हमें दे दोगे तो हम आपको वहां की रेजिडेंसी दे देंगे, सिटीजनशिप हम आपको दे देंगे। तो दे आर गोइंग विद अ ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी, जितने में तो वो 100-150 बंदों का ले सकते हैं सिटीजनशिप, तो इतने पैसे के साथ वो लोग जाते हैं। तो उस चीज को भी कंट्रोल करने के लिए वी नीड टू कंट्रोल ऑल दोस थिंग्स सो दैट कि we can also prevent our banking system, जो डिफॉल्टर्स है उनको पकड़ के कंट्री में, और इसके साथ साथ ईज आउट भी कर सके जो जेन्युइनली इन्वेस्ट करना चाहते हैं विद द कंडीशंस कि आप यू कैन टेक द परमिशन फ्रॉम द आरबीआई एंड यू कैन इन्वेस्ट इनटू द अदर कंट्रीज देयर। सो इन्होंने स्पेसिफिकली बोला कि जो मैंडेटरी है जिनके एसेट्स एनपीए हो गए हैं, तो देयर इज आल्सो स्टेटमेंट कि एवरीबॉडी दोज हु वांट टू like invest into the other country can take a NOC from the bank, जिनका ओनली एनपीए हो गया है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स है बैंकिंग सिस्टम में, उनको ही एनओसी लेना है। लाइक इफ एनी बिजनेसमैन इज पेइंग द लोन एट अ टाइम, तो उसको एनओसी लेने का जरूरत नहीं है, देयर इज अ नीड फॉर द एनओसी फॉर द डिफॉल्टर्स ओनली। तो डिफॉल्टर्स एंड दे आर नॉट पेइंग द लोन फ्रॉम अ लॉन्गर टाइम, जो उनके एसेट्स हैं दैट्स बिकम लाइक अ एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स बन गए हैं, तो उन केस में दे नीड टू टेक द like a NOC from these banks. हाँ हाँ, इंडियन बैंक मतलब जहां से भी आपने डेट लिया है वहां से आपको एनओसी लेना होगा। हाँ, इन्वेस्ट करने के लिए स्पेसिफिकली। एंड इफ द बैंक्स आर नॉट गिवन द एनओसी विद इन द 60 days, देयर इज अ टाइम पीरियड 60 days, 2 month का टाइम दिया गया है, अगर वो नहीं कर पा रहे हैं तो इट विल बी कंसीडर एज कि इट्स हैविंग नो इश्यू विद द गोइंग आउट ऑफ द अब्रॉड। तो यहाँ पे उनके लिए भी somebody like paying on time and not getting the NOC, so in that case it is considered as it is clear the NOC if the NOC is not provided within the 60 days। ठीक है, तो इसमें स्पेसिफिकली याद रखना है, they cannot invest into the gambling, they cannot invest into the property issues, like जो business property में नहीं invest कर सकते हैं। If they want to invest in some of the condition to the business related to rupee, they need to take approval from the RBI, and they also need to take NOC from the debtor, means it can be the banking, it can be the NBFC, वहां से उनको NOC approval लेना होगा if they want to invest into the foreign country. Then the any resident in India acquiring equity capital in a foreign entity or overseas direct investment ODI, अगर हम like इंडिया के लिए हम बोलते हैं FDI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, सिमिलरली ओवरसीज में हमें इन्वेस्ट करने के लिए ओडीआई, ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो इफ एनीबॉडी इज इन्वेस्टिंग इनटू द कंपनीज इन द फॉरेन कंट्री, दे नीड टू बी सबमिट एनुअल रिपोर्ट, उनको एनुअल रिपोर्ट सबमिट करना होगा विद द आरबीआई, एनुअल परफॉर्मेंस रिपोर्ट ऑफ द फॉरेन एंटिटी। या आपने यहाँ पे इतना सबमिट किया, इतना गेन हुआ, व्हाट इज द परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनी, दैट्स रिक्वायर्ड टू बी विद द आरबीआई। बट इन द स्पेसिफिक केसेस, इफ यू आर इन्वेस्टिंग मोर देन द 10%. If the company is having 1,000 crores and you are investing more than the 100 crores, then you need to submit this report with the RBI. So there is a condition. No such reporting shall be required where a person in India is holding less than the 10% of the equity. कि कंपनी का 10% से कम है आपके पास, तो ऐसी रिपोर्ट देने की कोई जरूरत नहीं है। But you need to give the reports if you are holding the more than the 10% of the company. So we can say that currently अंडर द लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम, जिस स्कीम्स के अंदर आप इन्वेस्ट करेंगे तो 2.5 लाख करोड़ से आप ज्यादा इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं फॉरेन एंटिटीज में। तो एन इंडियन एंटिटी कैन मेक ओपीआई नॉट एक्सीडिंग द 50% ऑफ इट्स नेटवर्थ। मान लो अभी अंबानी के पास 10,000 करोड़ है, तो 5,000 करोड़ से ज्यादा इन्वेस्ट नहीं कर सकता किसी भी फॉरेन कंपनी में, तो वो भी लिमिट है, क्योंकि इंडिया के एसेट्स है ना, ही इज लिविंग इन द इंडिया ना, so he cannot invest more than the 50% of its net worth. So these are the 5-6 conditions given here. Number 1 conditions, अगर आप 10% से ज्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं, you need to submit your reports to the RBI. आप 2.5 लाख करोड़ से ज्यादा इन्वेस्ट नहीं कर सकते,
आप अपनी नेट वर्थ का 50% से ज्यादा इन्वेस्ट नहीं कर सकते। अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो आपको एनओसी लेना होगा बैंकिंग सेक्टर से। If the banking sector is not giving the NOC, it is considered that you are doing a good job and you can after 60 days you can go and invest in the other company. अगर आप 10% से ज्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको आरबीआई को रिपोर्ट देना होगा। These are the some of the condition under this act. So if you see like अगर आप देखोगे तो इस तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं इंस्टीट्यूशन रिलेटेड कि आप इन्वेस्टमेंट, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ई कॉमर्स, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस। So with reference to the India, consider the following statements. This was the question in the 2021. So this type of the question can be framed on these rules. Number one, retail investor through the demat account can invest in the treasury bills and the government of India debt bonds in the primary market. So the second statement, the negotiating dealing system order matching is the government security trading platform of the Reserve Bank of India. The Central Depository Service Limited is jointly promoted by the RBI and the Bombay Stock Exchange. So what will the answer here? Anubhav, Dipali, Harish, Miraj, Ankita, what will the answer? D? B. How many are saying B? A. Answer is B here, 1 and 2 only. 1 and 2 statements are correct. Third statement is not correct here. So this was the question in 2021. So the similar kind of the question can be framed on these rules related to the FEMA.